2017, 2018 and 2019. So this is going to be my lecture number 4 on ratio, proportion and variation. And in this session, as I said, I'll be dealing with previous year CAT questions. So guys, my name is Pratik Sir. I have done ME in IT and B in computers. Overall, I am having experience of 7 years. I have scored 99 plus percentile in quant section for many times. So that was all about me. So these are the agendas of today's session. First of all, मैंने last में कल के session में एक homework दिया था. So we'll see that question first, and after that we'll see actual CAT questions on ratio, proportion, and variation. Yes, good evening, Srishti. Good evening, Kainat. Good evening, Harika. So if you are really interested in joining a group in which तुम्हें notification मिलता रहे related to class timing and related to class live कौन है अभी, you can join this group. And one more benefit of this group is you will get notes in form of PDF. So step is quite simple. You have to type this URL, or you can copy that URL also. In meanwhile, in chat box, definitely technical team will post that link. You can copy that link also, and you have to enter that on your browser. Then you will be redirected to a page in which you have to select CAT, and then you will be able to join that group. Yes, good evening, good evening, good evening. Good evening, Jagriti. Good evening, Pratik. Good evening, Aman. Good evening, Prashanjeet. Good evening, Himanshu. तो दिस इज मैंडेटरी अ काइंड ऑफ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सामने आए, ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी सेशंस होंगे, नो डाउट, बट ऑब्वियसली प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं समवट डिफरेंट क्वेश्चन लूंगा. दैट्स द रीजन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ऑलवेज गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. दिस इज नथिंग बट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. So if you are really targeting CAT 2020, go for this plan. Effective per month rate is 1458 per month. And apart from this, we'll also provide GDPI, mock GDPI and VAT session. And if you're really targeting CAT 2021, then go for this one. And effective rate is going to be 875. And whenever you will use referral code as PA10, you will get additional 10% discount. So this is mandatory. ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रैक्टिस से कुछ रह जाए. So do join this Unacademy Plus platform. This is quite beneficial for you guys. So let's start with today's session. I'll start with last session's homework question, and which was this. So how many of you got answer for this question? How many values can K take? Kunal Kumar, it is your guidance. Uh, are you are you my previous student? It is your guidelines or guidance because of which I was able to score 80 plus in CAT and secure admission in good college. Okay, thank you. So Kunal, are you my student? Okay, how many values can K take? Okay, so answer आने चालू हो गए. Karthik is saying 3. So tell me, what are the 3 values that K can take?
तो एज ऑफ नाउ मैंने हमेशा बताया है whenever there will be more than is equal to sign, in that case always you have to assume k. Okay, time Pune. Okay, thank you Kunal, thank you Kunal. So from this I can say that if I equate this with k, I can say that a will be equivalent to k times of b plus c plus d minus a. B is equal to k times c plus d plus a minus b. I can say that c will be equivalent to k times a plus b plus d minus c, and d will be equal to k times a plus b plus c minus d. So whenever I'll add LHS and RHS, just try to think, can I say that a plus b plus c plus d will be equivalent to k times, because k तो कॉमन आएगा ही. जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस, यहाँ पे एक बार a निगेटिव है एंड बाकी तीन बार a पॉजिटिव है. कैन आई से दैट 2a plus 2b plus 2c plus 2d will be there. So can I write this one as, just try to think a little bit, a plus b plus c plus d will be equivalent to 2k a plus b plus c plus d. Can I write like this? So what are the values? What are the values? I want values. तीन value कौन कौन से होंगे? Just answer में this. If I shift this whole value in RHS, can I write like this? A plus b plus c plus d minus 2k. A plus b plus c plus d will be equivalent to 0. Okay, first value is 1 by 2, that's correct. What about second value? If I take a plus b plus c plus d as common, I left with 1 minus 2k is equal to 0. Try to think like this, and that's the reason मैंने last question में भी बताया था कि always k का एक ही value नहीं आएगा, and this is the proof guys. तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है, whenever x multiplied with y is equal to 0 होता है, तो इधर x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू विल बी 0. दोनों का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. So just try to think. I can say that either a plus b plus c plus d will be 0 or 1 minus 2k will be 0. So whenever 1 minus 2k is 0, तो definitely I can say that k का वैल्यू will be 1 by 2, जो कि आंसर कार्तिक ने दिया है. k का वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? k का वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? जस्ट ट्राई टू थिंक, k का वैल्यू 0 कैसे आएगा? नाउ व्हेनेवर a plus b plus c plus d is equal to 0 and we are writing that a divided by पहला जो भी है b plus c plus d minus a is equal to k. अगर मैं फर्स्ट सिर्फ इसको और इसको मैं कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली आई कैन राइट एज a divided by b plus c plus d minus a will be equivalent to k. Just try to think, if a plus b plus c plus d is equal to 0, can I say that a can be written as, or minus a can be written as b plus c plus d? So can I write this, a divided by minus a is equal to k, or I can say that k will be equal to a minus, ऐसा ले लेंगे, and whenever I'll cancel this one, I'll get value of k as minus 1 by 2 also. तो k का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, k का वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकता है, एंड दैट्स द रीजन जीरो नहीं हो सकता. हेलो सूरज, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर जीरो होगा
तो जस्ट ट्राई टू थिंक, ए का वैल्यू भी जीरो होगा, बी का वैल्यू भी जीरो होगा, सी का वैल्यू भी जीरो होगा, बिकॉज दिस के इज जीरो, डी का वैल्यू भी जीरो होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर भी जीरो होना चाहिए, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए ना, सो दैट्स द रीजन, डेफिनेटली आंसर ऑफ दिस मस्ट बी 2 नॉट 3. So let's start with actual CAT questions. First question is from CAT 17 and this question was asked in slot 1. So question is like this. Suppose C1, C2, C3, C4, C5 are 5 companies. The profit made by C1, C2, C3 are in the ratio of 9 is to 10 is to 8. While the profits made by C2, C4 and C5 are in the ratio of 18 is to 19 is to 20. If C5 made a profit of 19 crore more than C1, that means profit made by C5 minus profit made by C1 is equal to 19 crore given here. So question is, then the total profit made by all the 5 companies is. So as of now, just try to compare this one. C1 is to C2 is to C3 is nothing but 9 is to 10 is to 8. And second thing which is given is C2 is to C4 is to C5 is nothing but 18 is to 19 is to 20. तो तुम्हारा नजर बिल्कुल साफ होना चाहिए, यहां पे भी C2 है एंड यहां पे भी C2 है. विल जस्ट ट्राई टू मेक दिस इक्वल. यहां पे C2 के जगह पे 10 है, यहां पे C2 के जगह पे 18 है. तो C2 का जो भी वैल्यू होना चाहिए दोनों केस में तुम्हें सेम रखना है. तो सिंस 10 एंड 18 का अगर मैं कॉमन मल्टीपल देखूं तो 90 आ जाएगा. दैट मीन्स यहां पे अगर मैं इसे 90 कर दूं और यहां पे भी 90 कर दूं, दैट मीन्स सारा एक केस आ जाएगा. जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. अगर मैं इसको 5 सॉरी इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कैन आई से दैट स्टिल रेशियो विल बी सेम. रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है. तो कैन आई से दैट C1 is to C2 is to C3 will be 81 is to 90 is to 72. Since 9 into 8 is 72, this is the first thing that we can get. Okay, आंसर आ रहे हैं. आंसर स्टिल जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस, ऐसे सॉल्व हो सकता है या नहीं. एंड सिमिलरली कैन आई से दैट C2 is to C4 is to C5 will be equivalent to, since we have to multiply this with 5, so this is going to be 90, this is going to be 95 and this is going to be 100. Yeah, all of you are correct, all of you are correct. So can I say that C1 is to C2 is to C3 is to C4 is to C5 will be nothing but 81, 90, 72, 95 and 100. तो जस्ट ट्राई टू थिंक, अगर मैंने x अज्यूम भी कर लिया, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे गिवन है C5 माइनस C1 इज इक्वल टू 19 करोड़. दैट मीन्स इन दोनों का अगर मैं एक्चुअल डिफरेंस देखूं तो वो भी 19 है. दैट मीन्स फॉर श्योर आई कैन से दैट 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़. जस्ट ट्राई टू थिंक, यहाँ पे C5 और C1 के बीच का जो डिफरेंस है, C5 is 19 more than C1 and 19 unit more. Since ये 19 unit है, x छोड़ दो, and in case of crore, this is 19 crore more.
That means, is it possible to say that 1 crore will be equivalent to 1 unit, or 1 unit is equivalent to 1 crore? The only thing that you have to do is, now you have to add 81, 90, 72, 95 and 100, and that is how you will get answer as 438. Since 1 plus 2 plus 5 is 8, this is 17 plus 7 24, 24 plus 9 is 33 का 3 हाथ में बचा 3. I'll say that 438 will be correct answer. So option number A was correct. तो आई होप ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेथड समझ में आया है या नहीं आया है. से यस और नो. समझ में आया है तो यस, नहीं समझ में आया है तो नो. Meanwhile, just try to see this question. A stall sells popcorn and chips in packet of 3 different sizes: large, super and jumbo. The number of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio of 7 is to 17 is to 16. For popcorn and for chips, it is 6 is to 15 is to 14. If the total number of popcorn packet in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn packet and jumbo chips packet are in the ratio of. So if I talk about popcorn, sizes are large, super and jumbo. Let's say this is 7x, this one is 17x and this one is 16x. If I do total, राजदीप पहले से सॉल्व किया हुआ है क्या तुमने? कार्तिक ऑल्सो पहले से सॉल्व किया है, अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो? This summation is going to be nothing but 33 plus 7 40x. And यहाँ पे काफी important point given है. If the total number of popcorn packet in its stock is same as that of chips packet, this is quite important line. Number of popcorn packet must be same as number of chips packet. So if I consider chips, अच्छा अब मुझे ऑर्डर चेंज करना होगा क्वेश्चन का, ये मैं सीक्वेंस में लेता जा रहा हूँ. दैट्स द रीजन सभी आंसर बता रहे हैं. ओके, चिप्स का अगर मैं देखूं, लार्ज इज 6y, this one is 15y and this is going to be 14y. If I'll add this, I'll get 35y. And unfortunately it is given that, unfortunately नहीं, fortunately it is given that दोनों का सेम है. दैट मीन्स ये इसी के इक्विवेलेंट होगा. तो ऑब्वियसली ये इसी के इक्विवेलेंट होगा. That's correct, that's correct. It is given that 40x will be equivalent to 35y. So can I say that 8x will be equivalent to 7y, or I can say that x by y will be 7 is to 8. तो डेफिनेटली ये ऐसा हो सकता है. इफ दिस वन इज इक्वल, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 40 और 35 का मल्टीपल, दैट मीन्स 40 एंड 35 का मल्टीपल, दैट मीन्स 280 अज्यूम कर लो नंबर ऑफ चिप्स एंड देन फाइंड कर लो इसका जंबो क्या होगा एंड इसका जंबो क्या होगा. एंड दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन. अगर ये इक्वल गिवन है, दैट मीन्स आई कैन सर्टेनली से दैट x by y मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 7 is to 8. ओके, 2000 से 2018 तक के मॉक्स दिए हुए. ओके गुड, चलो प्रैक्टिस हो रहा है. यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है x by y इज इक्वल टू 7 by 8 है. एंड इन केस ऑफ पॉपकॉर्न, जंबो साइज वाला जो था,
that was 16x, and in case of chips jumbo size वाला जो था that was 14y. So can I say that ratio of, since तुम्हें ratio of क्या निकालना है, popcorn to jumbo chips निकालना है, so that's the reason I can say that this is going to be, and for sure now you can put value of x and x divided by y as 7 by 8, and that is how you will get 2 and 2, that is 1:1 is the answer. So logic is quite simple. You don't need to actually find total value कितना है, जंबो का कितना है, लार्ज का कितना है, स्मॉल सुपर का कितना है. But the only thing that you can say is, since 40x is going to be 35y, so x by y will be 7:8. अब 7:8 कोई भी क्वेश्चन होता, इंस्टीड ऑफ दिस जंबो, अगर बोलता मैं यहाँ पे सुपर, इसका सुपर एंड इसका लार्ज का रेशियो क्या होगा, तो माई आंसर वुड बी लाइक 7/6 x by y है, तो x by y के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, सिर्फ 7/8. So this is how we can solve these kind of questions. So this is going to be 17 into 7. I can do like 10 into 7, 7 into 7. 10 into 7 is 70. 7 into 7 is 49. So I can say that 119, and 6 8 ja definitely going to be 48. So this is going to be my answer. ऐसे भी इक्वेट कर सकते हो, बट द थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन अ सिंपलर फॉर्म. प्रतीक, डेफिनेटली ऐसे भी कर सकते हो, बट अननेसेसरली तुम उसे कॉम्प्लेक्स कर रहे हो. मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूं, बट द थिंग इज अभी के लिए तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड सीरियसली अगर तुमने इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाया, तो सीरियसली तुम्हें कैट का कसम है. अगर तुमने इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाया, दैट मीन्स लिटरली यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. पेन नहीं उठाना है तुम्हें, कैट का कसम है तुम्हारे. कैट मतलब टेस्ट, कैट मतलब बिल्ली नहीं. डेफिनेटली प्रतीक एंड डेफिनेटली जागृति, वी कैन अज्यूम लाइक दैट जो तुम बता रहे हो. अगर ये क्वेश्चन पढ़ते के साथ तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स डेफिनेटली तुम्हें प्रैक्टिस का जरूरत है. क्वेश्चन पढ़ते के साथ आंसर आना चाहिए, एंड नो नीड टू इवन पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है तुम्हें. The thing is, just try to think like this. A is to B 3:4 given है, and B is to C जो है 2:1 given है. पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, A is to B 3:4 given है, and B is to C जो है 2:1 given है. यहाँ पे B 4 है, यहाँ पे 2 है. मैं इट्स बेटर कि मैं इसको 4 ही लिख दूं. Since B is to C is 2:1, that means 4:2 मैं लिख सकता हूं. That means A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 and C का वैल्यू is going to be 2. ये समझाने के लिए मैंने लिखा था. तो जस्ट ट्राई टू थिंक, जो भी A प्लस B प्लस C होगा, अगर मैंने 3x 4x एंड 2x अज्यूम किया है, दैट मीन्स डेफिनेटली इसका समेशन जो भी होगा वो 9x होगा. इसका मतलब ये है दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. तो अगर मैं 9, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9? लेट्स से इफ आई से 81, ये डिविजिबल है 9 से बिकॉज सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9. अगर मैं बोलूं लेट्स से 729, इसका अगर मैं समेशन देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी 18 विच इज मल्टीपल ऑफ 9. तो दैट्स द रीजन आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9.
तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत ही नहीं था। इसका समेशन 3 है, ये नहीं हो सकता। इसका समेशन 7 है, ये नहीं हो सकता। इसका समेशन 3 है, ये नहीं हो सकता। दैट्स द रीजन डेफिनेटली आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। दैट्स करेक्ट। I hope this much is clear to all of you. Okay, secret teacher wants my qualification. Okay, I have done ME in IT and BE in computers. Okay, this was the brilliant question from CAT 18 slot 1. Okay, question is Raju and Lalita originally had marbles in the ratio 4:9. मुझे ये मत बताओ, मुझे ये मत बताओ इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली बहुत सारे ने सॉल्व किया हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मैं क्या अज्यूम करूं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मैं क्या अज्यूम करूं। Raju and Lalita originally had marbles in the ratio of 4:9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of number of marbles with Raju to that with Lalita became 5:6. So what fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju? Options are 1/4, 1/5, 6/19 and 7/33. So just tell me what you can assume as total number of marbles. वो सब आंसर आ जाएगा। अगर तुम ये बता पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या अज्यूम करोगे, दैट मीन्स डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So my question is quite simple. What you can assume as total number of marbles? Okay, Ananda is saying 143 and Manav is saying assume 180. Why 180? Why 180? Okay, so ratio is 4:9 इनिशियली, जब मार्बल इसने दिया उसके पहले, एंड जब मार्बल इसने दे दिया, obviously Lalita is giving some marble to Raju, then the ratio becomes 5:6. So the thing is, इनिशियली जो भी मार्बल होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं मेरे पास पहले 3 मार्बल्स है, तुम्हारे पास 2 मार्बल है, मैंने एक मार्बल तुम्हें दे दिया, ये मैं हूं एंड दिस इज यू। मैंने एक मार्बल तुम्हें दे दिया, दैट मीन्स अभी तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, मेरे पास 2 बचेगा। दैट मीन्स फॉर श्योर आई कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो कांस्टेंट ही होगा। दैट्स द रीजन यहां पे भी जो भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होगा, अगर मैं 4x एंड 9x अज्यूम करूं, दैट मीन्स 13x मस्ट बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हियर। दैट मीन्स फॉर श्योर टोटल नंबर जो भी होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 13। ये मल्टीपल है, कैंसिल नहीं किया मैंने। सिमिलरली अगर आफ्टर गिविंग सम मार्बल टू राजू अगर रेशियो ये है, तो आई कैन अज्यूम 5y and 6y, that means total that must be 11y. So this must be multiple of 11. So the easiest number that will be multiple of 11 and 13 is 143. I hope this much is clear. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल अगर 133 है, तो बाकी सारा कुछ क्लियर है। So 143 is the total marble, and initially Raju and Lalita were having number of marbles in the ratio of 4:9. That means ये for sure
ये फॉर श्योर 44 होना चाहिए एंड दिस मस्ट बी डेफिनेटली 99. ओके सो डेफिनेटली नाउ इन अदर, जब ये कंडीशन हो गया दैट मीन्स मार्बल राजू एंड ललिता है, नॉट जे. And now as a result the ratio, Lalita is giving some marble and the ratio is becoming 5:6. So 5:6 अगर हो रहा है, just try to think like this. 5:6 हो रहा है, that means 11 ये दोनों हो रहा है. अगर मैं 11 से इसे डिवाइड करूं, 143 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, I'll get 13. So this must be 13 into 5, that means 65. And this must be 13 into 6, that is 78. So this is the initial case. That means initially Raju and Lalita were having 44 and 99 marbles. Whenever Lalita is giving some marbles, अगर तुमने यहां तक भी सॉल्व कर लिया, इनिशियली ललिता के पास 99 मार्बल था, तो भी आंसर आ जाएगा. मैं वो भी बता दे रहा हूं कैसे. तो डेफिनेटली अब बचे हैं 78 मार्बल्स. दैट मीन्स डेफिनेटली उसने 21 मार्बल्स दिया आउट ऑफ 99. एंड इफ आई कैंसिल इट बाई and if I cancel it by 3, I'll get 7/33. But the thing is, इतना करने का भी जरूरत नहीं है. अगर ये तुमने 44 और ये 99 अगर तुमने निकाल लिया, तो जस्ट ट्राई टू थिंक. बेस में डेफिनेटली ललिता वेर हैविंग 99 मार्बल्स, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 19, दैट मस्ट बी फ्रैक्शन ऑफ 99. 4 के मल्टीपल में 99 कभी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा. 5 के मल्टीपल में दैट मीन्स 5 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो 99 नहीं आएगा. 19 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो 99 नहीं आएगा. सो डेफिनेटली विल लेफ्ट विथ वन ऑप्शन विच इज 7/33. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. अगर तुम्हें ये करने का मन है तो इतना करो, अदरवाइज जस्ट प्ले विथ योर ब्रेन. एंड अगर ये 99 आ रहा है, सिंस यू हैव टू आंसर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अवर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स was given by Lalita to Raju, that means definitely जो total number होगा that will be in denominator. Yeah, definitely it's possible, definitely it's possible. Nishant, definitely you can prepare for CAT by yourself, and for any kind of guidelines you can watch my video. Okay, you have doubts, Srishti, that how it is 44. Okay, so since ratio is 4:9, so what I can say that Raju ke liye it will be 4/13 of 143. Since we have assumed total as 143, this is going to be 11, and that's the reason I can say that this will be 44 and this will be 99. So next question for you guys. This question is from CAT 18 slot 2. Okay, there can be many approach to solve this question. So initially, just try to think. The score of Amal and Vimal is in an examination are in the ratio of 11/12. That means 11x and 14x is the ratio of score of Amal and Vimal.
इफ आई एड अ कांस्टेंट टर्म, लेट्स से a मैंने ऐड कर दिया, and this is going to be 47 by 56. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो क्या आता है आंसर। अरे तुम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है या क्या है? ओके चलो कोई नहीं। तो लेट्स ट्राई टू थिंक। इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूं स्कोर ऑफ अमल एज 11x एंड स्कोर ऑफ बिमल एज 14x। दिस इज इनिशियल कंडीशन, जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस। अगर तुम्हें आता है देन इट्स ओके, बट स्टिल आई सजेस्ट यू टू जस्ट लुक एट दिस अप्रोच, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। हाँ ऑब्वियसली मैं शॉर्टकट ही बताने वाला हूं मानव। In final case, let's say this is going to be 47y and 56y. So are you getting this? मैंने दोनों रेशियो को अज्यूम कर लिया इनिशियली 11x 14x, एंड ये x नहीं अज्यूम कर सकते हम, x कर लोगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर डिफरेंट वेरिएबल अनटिल और अनलेस कोई वैसा केस ना हो। जस्ट ट्राई टू थिंक, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया है, लेट्स से k ऐड किया है, और यहाँ पे भी मैंने k ऐड किया है। 11x में k ऐड करने के बाद 47y हो जा रहा है, एंड यहाँ पे 14x में k ऐड करने के बाद 56y हो जा रहा है। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट दिस इक्वेशन एज 47 minus 11x 47y minus 11x will be equivalent to 56y minus 14x? या मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। नो नो इट्स ओके यू कैन ऑलवेज डिस्कस। अगर तुम्हारे पास अच्छा शॉर्टकट है डेफिनेटली मैं स्टूडेंट से भी लर्न करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड से कैन आई से दैट द डिफरेंस ऑफ दिस, सिंस मैंने यहाँ पे भी 11x में मैंने k ऐड किया तो ये 47y आया, एंड 14x में मैंने k ऐड किया तो ये 56y आया। तो 47y minus 11x will be equivalent to 56y minus 14x। ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Not at all, not at all Nishant, cat is not at all difficult. The only thing is तुम्हारा presence of mind, your perception towards that question, तुमने कैसे रीड किया है। लेट्स से अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखूं तो डिफरेंट स्टूडेंट जो है इसे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे। तो कैट एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन। So definitely if I shift y wala in RHS and x wala in LHS, I'll get 14x minus 11x equal to 56y minus 47y. Or for sure I can say that 3x will be equivalent to 9y. That means for sure x divided by y will be equivalent to 3 by 1. आई होप ये समझ में आ रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, x डिवाइडेड बाई y विल बी नथिंग बट 3 by 1। डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी डेफिनेटली कर सकते हैं, बट द थिंग इज तुमने कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड किया है। यहां पे क्वेश्चन है आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, तो ये स्कोर दोनों केसेस में सेम नहीं है। अगर ये दोनों केसेस में सेम होता तो डेफिनेटली मैं वही अप्रोच यूज करता। तो एज ऑफ नाउ आई कैन से दैट x by y विल बी इक्विवेलेंट टू 3 by 1। ये समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ये निकालने के लिए इतना कुछ तुम्हें करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट दिस एंड यू विल गेट x by y विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:1।
तो अब तुम्हें क्या करना है, द रेशियो ऑफ बिमल्स न्यू स्कोर, बिमल का नया स्कोर क्या है 56y डिवाइडेड बाय बिमल का ओल्ड ओरिजिनल स्कोर क्या है 14x. So can I say that y by x is going to be, since x by y is 3:1, so y by x is going to be 1:3. So what we can do is 56 divided by 14 into 3, and if I cancel it by 14 you will get 4, and that's the reason answer is option number B. डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हो. इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर मुझे सॉल्व करना होता तो लेट अस थिंक कितना कम टाइम लगेगा, एंड वी कैन सॉल्व लाइक दिस वन. 56y minus 14x must be equal to 47y minus 11x. ये मैंने लिख लिया. यहां से डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ 3x will be equal to 9y, तो x by y will be equivalent to 3/1. एंड तुम्हें क्या निकालना है, ओल्ड न्यू टू ओल्ड, तो यू हैव टू फाइंड 56y by 14x. तो x by y का तुम्हें वैल्यू पता है, तो द ओनली थिंग इज यू हैव टू पुट रिवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन. तो यू कैन सर्टेनली से दैट ये 3 होगा, 14 से इससे कैंसिल कर दो, 4/3, दैट इज द आंसर. आई गेस एक स्टेप यहाँ पे तुम 2 स्टेप ले सकते हो, मैंने थोड़ा फास्ट किया है. दिस इज 4th स्टेप एंड दिस इज 5th स्टेप एंड दिस इज फाइनल आंसर. तो आई होप ये थोड़ा तो इजी हुआ होगा. अगर मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं डेफिनेटली मैं फंस जाऊंगा एंड टाइम वेस्ट होगा. ऑलवेज यू हैव टू थिंक, कोई सा भी मेथड फॉलो करो, इधर ये मेथड फॉलो करो, ये मेथड फॉलो करो, और तुम्हें कोई भी इजी लगता हो डिनोमिनेटर सेम करके जो तुम बोल रहे हो, अगर उससे भी सॉल्व होता हो तो कर लो. बट द ओनली थिंग इज एग्जाम में वो कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए. तो एज ऑफ नाउ जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, while practicing always try to think for minimum 2 to 3 approach to solve any question. Definitely that will develop your mindset कि अगर क्वेश्चन आया है तो मैं easiest मेथड कौन सा अप्लाई करूं. अभी टाइम है, that's the reason I am saying always try to think for 2 to 3 approaches. So next question guys. This question is from CAT 19 slot 1. Okay. Amla, Bina and Gauri invest money in the ratio of 3:4:5 in fixed deposit having respective annual interest rate, that is 6:5:4. अगर इंटरेस्ट कुछ भी है, मैं बोलूं अगर 10% से मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, ये हालांकि SICI में होगा बट स्टिल यहाँ पे है तो थोड़ा देख लेते हैं. So after 1 year, can I say that my interest will be 10% of 100? That means this is nothing but rate of interest and this is nothing but my principal value. So just try to think, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है और मनी इन्वेस्टेड है, that is for A, B and G, that is let's say 3x, 4x and 5x, and जो भी रेट है that is nothing but 6y, 5y and 4y. Instead of having this as percentage, definitely your answer is correct, Khushbu. Definitely
अगर मैं ऐसा ना अज्यूम करूं और इस पचड़े में मैं ना पढ़ूं, so can I say that total interest, it is given that what is their total interest income after a year if Bina interest income exceeds Amla's by 250? So can I say that यहाँ पे अगर मैं interest लूं, so this is going to be 18xy, क्योंकि मुझे obviously multiply करना होगा and 100 से तो सभी में divide हो रहा है, since we are calculating ratio, तो ऐसा कर सकते हैं, this is going to be 20xy and this is going to be 20xy. So are you getting this? ये 18xy, ये 20xy, ये 20xy. Now it is given that if Bina's interest income, since interest तो यही है, exceeds Amla, in terms of xy, I can say that Bina's interest is exceeding Amla's income by 2xy. So can I say that? Can I say that 2xy will be equivalent to 250? Since in terms of xy, Bina's interest is 2xy more than Amla's, in terms of rupees, it is 250 more. So can I say that 2xy is equivalent to 250? And you have to find 58xy. So your answer must be 250 multiplied with 29. And definitely your answer must be, just try to think like this. No, answer must be 7250, Kartik. तो अगर मैं 250 को 30 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 250 माइनस कर दूं, आई कैन डेफिनेटली से दैट 7500 माइनस 250 होगा, और दिस इज गोइंग टू बी 7250 and this is going to be my answer. So now link is in the chat box. You can copy that tinyurl.com/Unacademy chat if you want to join that group on Telegram. And this question is very important. अगर ये क्वेश्चन किसी ने फास्टली सॉल्व कर लिया अभी, अगर पहले से कोई सॉल्व किया हो तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर अभी किसी ने फास्टली सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स मैं बेट लगा सकता हूं उसका 60 to 70% हो गया. 2xy, सृष्टि शर्मा 2xy ऐसे आ रहा है सिंस, ओके बीना का भी वही है, सो इट्स ओके. बीना इज हैविंग 20xy and Amla is having 18xy. So this is 2xy more in terms of xy. So this is 2xy more. Bina's interest income is actually 2xy more than Amla. This is in terms of xy. In terms of rupees, this must be more by 250. And that's the reason I am writing like 2xy will be equivalent to 250. So 58xy, since summation of this is going to be 40xy and this is 18. So 58xy का value क्या होगा? And my answer is definitely 7250. Okay, from tomorrow I'll start simple interest and compound interest. For that, SICI basic of percentage must be clear. तो अगर percentage clear नहीं है, then you have almost 23 hours of time. You can watch my previous video on this channel on percentage. So the first equation, after just reading that question, in an examination, Rama's score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. कार्तिक अभी सॉल्व किया है तुमने या पहले से सॉल्व किया हुआ है?
I can write Rama's score as 1/12 of मोहन प्लस अंजलि का एज है या क्या है, स्कोर है. ओके 32 इज लेट्स से सही है यानी. एंड सेकेंड कंडीशन इज गिवन दैट ऑल ऑफ सभी का जो मार्क्स है 6 से इंक्रीज हुआ. दैट मीन्स अंजलि का भी मार्क्स 6 से इंक्रीज हुआ, मोहन का भी मार्क्स 6 से इंक्रीज हुआ, and Rama's score is also increased by 6. And now this is in the ratio of 11:10:3. Okay, exam में क्या था? चलो, very good, experience matters. So from this, the first thing that we can write is, obviously अभी नहीं समझ में आएगा, but आगे हो सकता है समझ में आएगा. Since this is in the ratio of, यहाँ पे लिखते हैं a+6 m+6 and r+6 is in the ratio of 11:10:3. तो अगर मैं रामा का स्कोर देखूं, कैन आई से दैट दिस मस्ट बी 3/24 ऑफ टोटल मार्क्स? ऐसा लिख सकते हैं गाइस, यस और नो? कैन आई से दैट रामा's का स्कोर, फाइनल स्कोर विल बी 3/24 ऑफ एक्चुअल स्कोर? So are you getting this? Okay, your senior gives. So as of now, the only change that you have to make is, can I say that r+6 का value will be 3/24 of a plus m plus r plus 18? बिकॉज ये समेशन जो भी आएगा इसका मैं 3/24 लिखूं. Yeah, this is CAT 19 question. CAT 19 slot 2, that is afternoon slot. So can I say that r+6 will be 3/24 of this one? Say yes or no. Definitely we can write this. This must be total जो भी इसका एज आएगा उसका 3/4. Since ratio is like this, 11:10:3. So from first equation, we can also write m plus a as 12r. This is equation number first. So can I write this one as, just try to see, r+6 will be nothing but 1/8 of 12r plus r plus 18, or by cross multiplying this one will get 8r plus 48 plus 13r plus 18 into 8. 18 into 8 is going to be 180 minus 36, that is 144. सर ये तो 18 ही रहेगा ना, 18 ही रहेगा, मैं कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर गलत होता. So that's the reason I can say that 5r will be equivalent to 30. So r का value is 6. So from this I can certainly say that r का value is 6. Whenever r का value is 6, that means this is going to be 12. So just try to think. थर्ड पार्ट जो 3 पार्ट है वो 12 हो रहा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो जो 11 के रेशियो में है, दैट मीन्स अंजलि का एज इन द रेशियो ऑफ, सिंस ये 11, अगर मैं अंजलि एंड रामा का देखूं तो अंजलि एंड रामा का एज इज 11:3. सो दिस इज नथिंग बट 12. क्योंकि अगर मैं r का वैल्यू 6 पुट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 12. सो टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज गोइंग टू बी 44. I hope ये क्लियर है. अंजलि will be 44 and Rama will be 12.
So that's the reason difference of the Anjali score exceeds Rama's score by 44 minus 12, that is 32. So I hope this much is clear to all of you. Say yes or no. Okay, this question is quite easy. This is homework. In case अगर डाउट हुआ तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना. Answer of this question is option number A. तो डेली का टाइमिंग कुछ ऐसा है. 5 to 6 p.m. Ashish sir will take LRDI. 6 to 7 p.m. Amit sir will take Quant. 7 to 8 p.m. Bobby ma'am will take VRC. And 8 to 9, once again, I'll take Quant. Yeah, we can also eliminate this one by option. Definitely. 7 ही आंसर है. 7 ही है. मैंने 7 टिक किया है. देख लो. So these are the benefits of joining Unacademy Plus subscription. You will be able to attend live classes. You will be able to interact with educator. You will be able to give or attend polls and leaderboard, which is quite important, so that तुम्हारा भी moral boost हो और मुझे भी पता चल पाए कौन सा क्वेश्चन में तुमने कैसा आंसर किया है. द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग, मैं एक शब्द में बोलूंगा, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज you will be able to attend more session. That means you will be able to solve more number of questions. Another benefit is like you can attend test series and based on this analysis is there, तुम किसी भी 100 परसेंटाइलर और 99 प्लस परसेंटाइलर का इंटरव्यू देखो, सभी ने मिनिमम टू मिनिमम 25 to 40 मॉक दिया ही है. एंड दोनों को व्हाट मेक देम डिफरेंट एक्चुअली, आफ्टर दैट मॉक वो रुकते नहीं है, वो एनालिसिस भी देखते हैं कि कहां उन्होंने गलती किया. सो दैट्स द रीजन एनालिसिस प्लेज क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल. Yeah, lecture 2 is uploaded. Lecture 2 is uploaded. You can check lecture 2 is uploaded. 2 दिन पहले का, लाइक कल मैंने लेक्चर 3 लिया था, परसों लिया था. इट्स अपलोडेड. If it is not uploaded, then I'll definitely send that link. I'll send that link on this comment box. मैं comment box में type कर दूंगा. You will be able to clear your doubt, which is quite important. In Plus platform, after every 3 lecture, there will be one doubt solving. जहाँ पे तुम doubt, there will be one doubt solving session. जहाँ पे तुम अपना doubt जो भी है उसका फोटो लेके तुम easily जहां पे अपना डाउट इजिली तुम फोटो के फॉर्म में सेंड कर सकते हो. So these are the steps, guys. You have to search for Unacademy learning app. Then you need to install it. This is step number 2. Then you need to select plus. Then you need to select CAT course, and almost there are 3800 courses available. And then you need to click on get subscription. Whenever I'm saying course, that means different faculties ke course. And these are the plans. If you are targeting CAT 2020, then definitely I'll suggest you to go for this plan. Apart from all lectures will also provide you mock GDPI, तो तुम्हें कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है. And if you are really targeting CAT 2021, then go for this one. That means if you are in final year or if you are targeting for next year,
definitely go for this plan. And whenever you will use referral code as PA10, you will get additional 10% discount. Hi Shruti. So these are the different channels like CAT, नीट का भी है, जेई का भी है, 9, 10th, 11, 12 का भी है. अगर किसी को भी ऐसा हेल्प चाहिए तो do help them. If you really liked my video, then subscribe this channel and click the bell icon so that every time जब भी कुछ नया notification हो, you will be updated. And share this among your friends so that all will be benefited. तो अगर कुछ भी समझ में आया है, then like this video so that मैं भी थोड़ा motivated feel करूँ. Good night, guys. Thank you.